So as you know, in the last period, we have seen that nucleus of any atom is consisting of protons and neutrons, isn't it? And these protons and neutrons combine together to form a nucleus. And these protons and neutrons are bind together with the help of a energy, and that energy it is called as the binding energy. After having seen this one, the next point regarding the nucleus, because throughout this particular chapter we have to deal with the nucleus and its property. Am I correct? पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे सेक्शन के अंदर हमको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है. So we have seen that the nucleus, it is consisting of proton and neutrons. Then questions come in our mind that how these protons and neutrons are combined together in a nucleus. बार बार कहते आ रहे गुज़िश्ता 2-3 पीरियड से कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कंबाइन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन है. एम आई करेक्ट? ऐसे ही बोल रहे हैं ना हम. तो अभी सवाल ये पैदा हुआ कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक दूसरे से जुड़े कर एक न्यूक्लियस को जन्म दिए हैं, तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कौन है जो इनको जुड़ाए रखता है? ये सवाल आता ना भाई. कोई भी चीज है जुड़कर एक चीज बना रही है, तो इनको जुड़ा के रखने के पीछे कौन कार फरमा है? Which type of source is responsible for binding these two protons or these two different types of particles, it is protons and neutrons combined together in order to hold a nucleus, isn't it? And therefore, after the detailed study, it come to know that between these protons and neutrons, there is a presence of one particular type of force, which is present between protons and neutrons, and this force is acts between proton and neutron, and that force is called as the nuclear force, isn't it? And nuclear force is the force that bind the proton and neutrons in the nucleus together. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके पीछे कौन कार फरमा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉर दैट वन, protons and neutrons are combined together or bind together with the help of a force, and that force is called as the nuclear force. The force can exist between protons and neutrons. Neutrons and protons, किसके किसके दरमियान फोर्स है? ये न्यूक्लियर फोर्स तो है जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनाए रखती, लेकिन ये फोर्स किसके किसके दरमियान है? There is a force between protons, there is a force between proton neutrons, and there is a force between neutron and neutron, and these three forces collectively called the nuclear forces. Are you getting what I am going to say? Please unmute yourself and tell me yes or no. समझ में आ रही बात आपके? All of you please unmute yourself. Sumayya, Arshad, Tanazza. Yes, sir. Nucleus. Yes, sir. Yes, nucleus, it is made up of proton and neutrons. These protons and neutrons are combined together with the help of a force. That force it is called as the nuclear force. Collectively, it is called as the nuclear force, but this force is of three types. These forces are between protons, between proton neutrons, and between neutrons and neutrons. And these forces which are present among the nucleons inside the nucleus, which are responsible to hold the nucleus as a nucleus, it is called as the nuclear force. Now we know, मैं पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर जो ड्रॉ किया मैंने, these are the protons and neutrons which are just like a bundle, or this जैसा अंगूर का एक गुच्छा रहता ना, उस टाइप में ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन के न्यूक्लियस बनाया है इन्होंने, isn't it? और ये बाइंडिंग एनर्जी की मदद से जुड़े हुए हैं. आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप फिगर में मैंने यहाँ बताने की कोशिश की कि प्रोटॉन्स इस तरह से कैसे ये न्यूक्लियस को जो है तो एक न्यूक्लियस फॉर्म करते, कैसी फोर्स उनको लगती है, isn't it? That means binding protons in the atomic nucleus is nothing but it is the nuclear force. Now inside the nucleus, as we know, there is a presence of protons and neutrons. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Protons are positively charged. Neutrons are chargeless. Just now I have told you that these nuclear forces are between the protons, neutrons, and neutrons. Then you may say that protons and protons, they have the positive charge,
Therefore, how there is the interaction between them? There must be the presence of the Coulomb repulsive force between them. That means electrostatic force must be produced, and which form the nucleus to be an explosive. सवाल ये पैदा हुआ कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान कैसी कुव्वत हो गई, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमको मालूम है कि दो पार्टिकल जो सेम चार्ज रखते, they always repel to each other. But here the nuclear force is strong enough to keep them together and overcome that resistance at the short range, isn't it? So now for that one a theory was assumed, that in the proton neutron theory was developed, and in the proton neutron theory of nucleus it is assumed that nucleus of any atom, it is made up of proton and neutron, or it is consist of proton and neutron. Okay, now the question is that how the nucleus holds the positively charged proton packed closely together with development of Coulomb repulsive force. सवाल ये आया कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक बंडल के अंदर, एक पैकेट के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते होंगे, जबकि हमको ये तो मालूम है कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनके दरमियान कौन सी कुव्वत जन्म लेती, रिपल्सिव फोर्स, कूलम रिपल्सिव फोर्स। पढ़े क्या आपने 12th में? Yes, sir. So now the question is that how this nucleus holds together the positively charged protons packed closely together which develop the Coulomb repulsive forces, rendering the whole arrangement highly exclusive, isn't it? And therefore the attraction that keep the proton and neutron together, एक ये तो जो है तो ambiguity है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे रह गए। दूसरा ये सवाल आया कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रह गए, दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो एक सवाल ये आता है कि ठीक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस वास्ते रहे होंगे कि दोनों के दरमियान कौन सी कुव्वत होगी, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, isn't it? But later it was found that the gravitational force for later is too small. It is not now believed that the particles inside the nucleus are held together by means of a strong attractive force, and that strong attractive force which is present between the nucleons, nucleons बोले तो कौन जी, protons और neutrons, and that force is called as the nuclear force. ये force somewhat complex कैसी है, इतनी इजी नहीं है। सवाल ये चाह रहा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे मिल गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, तो नहीं, स्टडी करने के बाद, क्योंकि थियोरेटिकल आर्टिकल यहाँ कुछ प्रूव नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं होगा, because someone has done the experiment and we are just taking the knowledge. That means this nuclear physics, it is purely a theoretical section. It is not just like a photoelectric effect or X-ray in which we have derived the expression and experiment we have performed. So remember one thing, this our section, it is purely a theoretical one. So question is that these protons and neutrons, they combines together, isn't it? And they form a nucleus. But this formation of a nucleus by the combination of proton and neutron is purely due to a particular type of strong attractive force between these nucleons, and this attractive force between the nucleons is called as the nuclear force. This nuclear force is highly complex in nature and is different in character. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, इट्स कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कैसे हैं इनकी वैल्यू अगर हम देखें तो these nuclear forces are 137 times stronger than electrostatic force। कैसी कीमत भी बताई जा रही है इसकी कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, जो न्यूक्लियस को बनाए रखते हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जुड़ाए रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि कूलम रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, बल्कि ये अलग किस्म की फोर्सेस हैं। इनका नेचर समवॉट इज कॉम्प्लेक्स, और इनकी कीमत के बारे में, इनकी कुव्वत के बारे में अगर देखें, इनकी पावर के बारे में देखें, तो these nuclear forces are 137 times stronger than the electrostatic force and about 10 raised to minus 39 times stronger than the gravitational force, isn't it? And the experimental result reveal the somewhat information about this one. पहले तो क्या बोल रहा है कि अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस किसके किसके दरमियान है, कैसे हैं, तो एक तीन जो है तो अलग अलग चीजें नजर आई। फर्स्ट वन इज दैट there are strong attractive forces between the nucleons. These forces are between the neutron and proton, between two protons and two neutrons, and between the neutron. That means among the nucleons, that means when they are inside the nucleus,
ये न्यूक्लियर फोर्सेस है बोल रहे ना हम कि न्यूक्लियर फोर्सेस है जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनाए रखते। तो ये फोर्सेस कितने किस्म की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस? हाउ मेनी? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर? 3। Three types of forces Yes, are कौन there. कौन सी फोर्सेस है? फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन दैट इज पीपी फोर्स, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दैट इज एनपी फोर्स, and force between neutron and neutron that is called as the NN force, and these three forces collectively called as the nuclear forces. समझ में आ रही बात आपके? और ये तीनों forces they are different from the Coulomb repulsive forces, they are different from the gravitational forces. Value and power of these forces is somewhat 137 times more than the electrostatic Coulomb repulsive force and 10 raised to minus 39 times stronger than the gravitational force. यानी कि ये तीनों फोर्सेस अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, इनका जो है दिगर कूलम और ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है तो उनके टाइप के जैसे कैरेक्टर इनके मौजूद नहीं है। और ये तीनों किस्म के फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान रहते, यही वजह है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस बना देता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक गुच्छे के अंदर, एक अंगूर के गुच्छे के अंदर जैसे अंगूर लगे रहते हैं, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसको जन्म देते हैं? Proton and neutrons bind together with the help of these three forces that are called as the nuclear forces, and they form a what? क्या बनाते हैं? They form a what? Please tell me, Sumaya, Tanazza, Anjar. Nucleus. Form a nucleus. The magnitude of the Nucleus. interaction depends upon the internuclear. Now, how much is the nuclear forces are there? What are their values? What is the strength of NN force? What is the strength of NP force? What is the strength or magnitude of the PP force? It is depend upon the distance of the nucleon. यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन कितने दूरी पर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने दूरी पर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने दूरी पर है, इसकी वैल्यू का जो है तो इनसार उनकी उनकी डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज द इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस। अपन कल पढ़ के आए थे ना कि शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियर फोर्सेस तो है लेकिन न्यूक्लियर सैचुरेशन कैसा है बोले थे अपन ने? शॉर्ट रेंज टाइप है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियन दूसरों के साथ इंटरेक्ट तो करता, लेकिन सबके साथ नहीं करता, बल्कि किसके साथ करता? जो उससे कैसे है, दूर है क्या? Please tell me. First number nucleon will interact with the other nucleon which is at कहाँ पे? Nearby. Yes, nearby or at a short distance from this one. So similarly, the value of these three types of forces, NN, NP and PP forces, is depends upon appreciably on the internucleon distance, and the force of attraction between the nucleons is appreciably strong. कब strong होंगे ये? When the distance is 1.9 into 10 raised to minus 15 meter. मतलब कहाँ तक इनकी रेंज रहती? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है? ये न्यूक्लियस की रेडियस, ये जो आप अगर देखें तो हमने बोले थे ना कि न्यूक्लियस जितना छोटा रहेगा 1.9 इंटू 10 टू माइनस 15 मीटर के अंदर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और उसका रेडियस भी आसपास उतना चाहिए। उस दिन कल हमने देखा था कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इट इज जस्ट 1.2 इंटू 10 टू माइनस 15 मीटर। यानी जितना छोटा उसका जो है तो रेडियस रहेगा, डायमीटर रहेगा, उतने क्लोज एक दूसरे के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, और उतना ज्यादा उनके दरमियान क्या रहेंगे? कोऑर्डिनेट। दूर दूर अगर ज्यादा बड़ा रहा न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर फैले हुए रहेंगे, दूर दूर फैले हुए रहेंगे तो उनके दरमियान इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस ज्यादा रहा तो इंटरेक्शन कम रहेगा कि अट्रैक्शन जो है तो ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? दूर वाली चीज को खींचना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत करीब वाली के। तो जितना क्लोज रहेगा न्यूक्लियस, जितने जो है तो उनका डायमीटर या रेडियस कम रहेगा, जिनका जो है तो न्यूक्लियन इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस कम रहेगा, उतने ज्यादा जो है तो दे विल बी कॉम्पैक्ट और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल इंटर that internuclear force will be more, and therefore the force of attraction between the nucleons is appreciably strong when the distance is 1.9 into 10 raised to minus 15 meter. As in case of the most of the nuclei, this force is decreases rapidly when the radius is 1 by r square. With increase in the internucleon distance, r vanishes when the nucleons are further apart from each other. अभी बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स कम कम होती जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर एक दूसरे से दूर दूर, बड़ा कमरा है तो मेंबर दूर दूर बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से, है कि नहीं, जो आजकल चल रहा है। एम ए करेक्ट? समझ रहे हैं आप बात को?
फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की टर्म चल रही ना आजकल, क्या मतलब है कि दूर दूर Yes, बैठो। sir. तो अगर न्यूक्लियस का अगर रेडियस बड़ा रहा तो न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर जो है तो मूव करेंगे, इस वास्ते इनके दरमियान इंटरेक्शन कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेंगे। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेंगी तो न्यूक्लियर फोर्स की जो न्यूक्लियर फोर्सेज जो है एन पीपी और एन पी, इनकी वैल्यू भी कम रहेगी। समझ में आ रही ना बात, यानी कि एज द रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, this the nuclear force goes on increasing, and if the radius of the nucleus is less, then this nuclear force is more. That means the relation between the nuclear force and radius is of which type, रेडियस में और जो है तो न्यूक्लियर फोर्सेस में कैसा रिलेशन है, कि डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? प्लीज टेल मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, सुमैया एंड अदर्स। Anazza, Arshad, can you tell me what is, which type of relation is there between the nuclear force and the radius of the nucleus? Direct relation है कि inverse relation है? Please unmute yourself and tell me. Yes, Anazza. Inverse relation. Inverse relation is there, and same thing is reflecting here with the increase in the internucleon distance r, and vanishes when the nucleus are further apart from the 10 raised to minus 14 meter. The force between the nucleon is charge independent. दूसरी एक है, पहले तो क्या समझ में आया, न्यूक्लियर फोर्सेस के ताल्लुक से तीन बातें। पहली बात तो कौन सी है, अभी बोले कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स और द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस प्ले इट्स रोल, यानी ये न्यूक्लियर फोर्सेस की वैल्यू कम या ज्यादा रहना, या ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग या वीक रहना, इसका इन्हिसार किसके ऊपर है? द डिपेंडेंस ऑफ द strength of the nuclear force is depend upon the nuclear radius, or in other words you may call it the internucleon distance. Am I correct? Have you got this idea? Please tell me yes or no. Yes, sir. Now second concept, that अपन पढ़ रहे किसके बारे में, किसका डिस्कशन चल रहा है जी? We were discussing about which factor, किसकी बात चल रही है? Nuclear forces. Yes, nuclear forces. First term we have seen that nuclear forces depends upon the internucleon distance. Second concept is that the force between the nucleons, यानी कि this nuclear force is charge independent. Charge independent बोले तो that is it is the same for all three types of nucleons pairs, namely N, PP and NP. Charge बोले तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, स्पिन रहती, इनवर्स स्पिन, आपने देखे ना ऐसा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज वालों के पास वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज वालों के पास कम है, चार्जलेस वालों के पास कम ज्यादा है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, यानी कि दिस थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस एन पीपी एंड एनपी, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। यानी कि न्यूक्लियर थ्योरी हमको क्या बता रही है, दूसरा कंसेप्ट, द फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। मींस व्हाट, it is the same for n force is the value of n force is exactly equal to the values of np force is exactly equal to the value of n force। तीनों भी फोर्स, कितने फोर्सेस रहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, कितनों को मिला के बोलते हैं, कितनों को मिला के न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं प्लीज? तीन को बोलते हैं। NN force, हाँ तीन। यस, तो ये कौन कौन से तीन है? बोलो अर्शद, तीन फोर्सेस कौन कौन से है, प्लीज टेल मी। एन, एनपी और पीपी, ये तीनों की फोर्सेस की कीमत सेम रहेगी irrespective of their charge, isn't it? And for interaction between protons, however, the contribution of the repulsive Coulomb force to the nuclear force must be considered, and this Coulomb repulsive force is about 1/27, as we have seen, times weaker than the nuclear force, because we have seen, because PP force was the force between proton and proton, but this PP force is the Coulomb repulsive force। we know कि जब दो चार्जेस सेम रहते हैं तो there is a repulsion between them, and that Coulomb repulsive force is no doubt present, but that Coulomb repulsive force is not play its role here, but this force is somewhat lesser, that are weaker, they are 1.37 times weaker than the nuclear force. Although the Coulomb repulsion between a large number of protons in heavy nucleons may overcome the attractive force, and that leads to instability। यानी कि क्या बात बता रहे हैं अपन, मिसाल के तौर पर अगर हम फर्ज करें कि पीपी फोर्स अगर ज्यादा है, तो पीपी फोर्स ज्यादा होने की वजह से पीपी तीनों में अगर पीपी फोर्स ज्यादा है बोले तो कौन सी तादाद ज्यादा रहना जी, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा रहना कि न्यूट्रॉन की?
प्लीज टेल मी। Proton. प्रोटॉन की तादाद, लेकिन प्रोटॉन की तादाद हर वक्त ज्यादा है क्या? प्रोटॉन की तादाद, the value of the No. proton may be more in case of the weak nuclei or in the case of light nuclei, but in case of the higher heavy nuclei, the number of protons are less in number. That means our conclusion that pp force is strong in comparison of n and np, it is useless. अगर हम थोड़ी देर के वास्ते फर्ज करें कि n force strong है, in order to have the n force strong, number of neutrons should be more than number of protons. It is possible in case of the heavy nuclei, but in case of the lighter nuclei, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलियम है, नियॉन है, जो छोटे छोटे न्यूक्लिया है, वहां पर तो न्यूट्रॉन की तादाद कम है, प्रोटॉन की नहीं, लेकिन वो स्टेबल है कि नहीं? वो उनका तो न्यूक्लियस बना हुआ रहता है। स्टेबल मतलब न्यूक्लियस रहता है कि नहीं, कि टूट जाता? नहीं टूटता, वो भी स्टेबल है। फिर सवाल यह आया कि एन फोर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फ्रॉम दिस टू कंक्लूजन, from these two agreement they are getting vanished, we come to the point that these three types of forces are approximately equal to each other. That means n is approximately equal to pp is approximately equal to np, and this leads to us to the conclusion that the force between nucleons is charge independent. This is charge independent hypothesis, isn't it? Now next term you should understand that nuclear force, पहले ही बता दिया कि nuclear forces are of short range type. कैसे हैं ये? NNPP ये कैसे हैं ये सब? बहुत ज्यादा दूर दूर वाले को अट्रैक्ट करते क्या हो? नहीं. The nuclear forces are short range, that is nucleon interact with the limited number of nearest neighbors and not within the all nucleons in the content in the nucleus which are present in the nucleus. सबके साथ nucleon interact नहीं करते जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कुछ ही के साथ जो है तो इंटरेक्शन करता है, isn't it? It is an experimental fact that binding energy per nucleon is approximate constant, which means that total binding energy is proportional to the mass number, as we have seen. जब ये न्यूक्लियन अपन बोल रहे कि सबके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसका मतलब इंटरेक्टिंग पेयर भी लिमिटेड फॉर्म होते, the limited interacting pairs will be formed. Binding energy is proportional to the limited binding pairs, that is a into a minus 1, where a minus 1 is very small. Therefore approximately we come to the conclusion that binding energy is proportional to the mass number, as we have seen in the yesterday's period. Now one more thing, the nuclear forces are spin dependent. क्या मतलब हुआ जी? पहले क्या टर्म बोले अपन ने कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। पहले क्या बोले हमने? न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट मींस व्हाट? न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। क्या बोले हमने प्लीज? पहले क्या बोले कि न्यूक्लियर फोर्स इज डिपेंड अपॉन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दूसरा क्या बोले? न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज रहता है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। फिर क्या बोले? ये न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे हैं? शॉर्ट रेंज टाइप है। उसी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, which leads us to the conclusion of dependence of the binding energy, as we have seen in the previous period. Now one more point or one more property about this nuclear forces it is explaining here. These forces are spin dependent. Can you tell me what is spin? All of you please unmute and tell me. Spin समझता आपको? Please Arshad Khan, Siddiqui Tanazza, Sumaya, please unmute yourself and tell me, do you know spin? Spin समझता आपको बेटा? Yes, sir. ये जो पार्टिकल जो हरकत करते ना, फिर रहे ना ऐसा, एक कभी वो ऐसा फिरते कभी वो ऐसा फिरते। अर्शद समझ रहे आप? गोल फिरते ना वो, हम बोलते क्रिकेट के बॉल को स्पिन करा रहे बोलते हम। क्या मतलब? कभी ऐसा फिराते कभी ऐसा फिराते, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन। क्रिकेट में टर्म सुने होंगे आपने अरशद, isn't it? Yes, sir. तो यहाँ पर भी हमारे न्यूक्लियंस बोले तो कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फिर रहे ना हो, लेकिन फिरते कभी ऐसा फिरेंगे। आपको मालूम होगा केमिस्ट्री में आपने सुने होंगे स्पिन को प्लस माइनस वन हाफ ऐसा बताते अपन। डू यू रिमेम्बर? कैन यू सी प्लीज? isn't it? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स इज डिपेंड अपॉन द स्पिन, पॉजिटिव स्पिन और निगेटिव स्पिन या प्लस हाफ या माइनस हाफ स्पिन, इसके ऊपर डिपेंड करती है उनकी कीमत। द न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, दैट इज they depend on the relative spin of the interacting nucleons.
The nucleons, that is proton and neutrons, when they move inside the nucleus in a circular orbit, then their spin, whether they are positive one half or they are negative one half, depending on this value, the nuclear forces value changes. For example, nuclear forces between the nucleons having parallel spin is stronger than between the two nucleons having the anti-parallel spin. Suppose there one proton is there, अपन को तो मालूम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान क्या है, इंटरेक्शन है, यानी कौन सी फोर्स है, एनपी फोर्स है. Suppose one proton is there and it has the positive spin, that is plus half, and there is another neutron, it is also having the plus half spin, yet it is also moving in the same direction like this, isn't it? Then at that time the value of the nuclear force is high. कैसा समझ में आ रहा क्या, एक प्रोटॉन है ऐसा फिर रहा, isn't it? और वो साइड में जो है तो न्यूट्रॉन भी फिर रहा, तो दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, यानी कि इज द स्पिन इज पैरेलल. पैरेलल स्पिन किसको बोली गई, समझ में आ रही की बात आपके में, दो बोथ आर हैविंग प्लस हाफ, वन हाफ स्पिन. जब दोनों दो पार्टिकल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर उनकी स्पिन सेम है, पैरेलल स्पिन है, तो एट दैट टाइम द न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांग इन कंपैरिजन ऑफ एक पैरेलल है दूसरा एंटी पैरेलल, एक ऊपर है और एक नीचे है, उस वक्त जो इंटरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, उस वक्त इंटरेक्टिंग फोर्स स्ट्रांग रहेंगी क्या वीक रहेंगी जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. सिद्दीकी तनज़ा, एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल के वक्त जो है तो वैल्यू कैसी रहेंगी, जीरो. जीरो मतलब लेस रहेगी, कम रहेगी. दैट मींस from this fourth point we come to the conclusion that internuclear force, यानी कि nuclear forces between the nucleons, it depends upon the spin of the particle, and if the spin is parallel then strong nuclear force is found, and if the spin is anti-parallel, यानी कि one particle is having positive plus half and another particle which is in interacting pair is having the spin as minus one half, then at that time the spin, the internuclear force is less. So as the nuclear force are attractive, they are very strong, they are charge independent, and proton of the nucleus do not fly apart from this one. One more point समझ में आएगा, nuclear force, this is most important article from the exam. Yes, sir. Point of view. Now one more things we want to know here, that is the mesons. So definition of mesons are there. The mesons are hadronic subatomic particle consist of one quark and antiquark. ये mesons क्या है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का जो है तो एंटी जो है इमेजिनरी पार्ट है, that is called as the mesons. Mesons theory of the nuclear forces was first time given by the scientist Yukawa in 1935, and according to the scientist Yukawa, the existence of new kind of field between the nucleons now known as the mesons. अभी अपन बोले ना कि न्यूक्लियर फोर्सेस है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस का वजूद में आना ही क्या बोल रहा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाउडी न्यूक्लियस पार्टिकल एंड दैट इज कॉल्ड एज द mesons. क्या है ये mesons, बल्कि mesons ये जो है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब हेटेरो पार्टिकल है, जिसमें कंटिन्यूअस चार्ज बदलते रहता, यानी कि प्रोटॉन जो है तो अपने साथी को जो है तो पॉजिटिव चार्ज जो है तो देता और खुद क्या बन जाता, जो है तो लेस पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता. तो ये जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने का जो पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड एज द मेसन. दैट मींस the mesons field pointed out the nuclear force arise due to the continuous exchange of positive and negative particle. यानी कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर करते रहते, चार्ज एक्सचेंज करते रहते, और ये एक्सचेंज करने के बाद जो पार्टिकल का नेट बचता है, दैट इज कॉल्ड एज द mesons, and that is called as the mesons theory. Yukawa particles are terms and mesons because of their mass being intermediate between the two nucleon and develop an attractive force between them. According to the meson theory, nucleon consist of, यानी कि न्यूक्लियन जो रहते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उनका जो आइडेंटिकल कोर जो रहता उसी को जो है तो क्या बोलते हैं, यानी कि एक प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन के तरफ लार्ज नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे mesons रहते हैं, और वो क्लाउड के तौर पर उसके अंदर अबर कैसा रहता, क्लाउड, क्लाउड के अंदर कैसा जो तो जमघट रहता, गुच्छा रहता, वैसे ही जो है तो पार्टिकल्स बने हुए रहते, एंड दैट कॉल्ड एज द mesons. They so all nucleon consist of identical core surrounded by the cloud of one or more mesons.
which may be neutral or we may be carrying either charge. According to the neutron, proton differ only in the composition. That means the exchange of the charge will be takes place like this. Proton give rise to one neutron plus neutrino or plus one, or mu minus one or isn't. Where mu plus one and minus one represent the positive and negative mesons. Isn't it? इन्हें जो जाके एक जो उसके अंदर जो particle रहेगा, it is called as the positive meson. This is called as the negative meson. That means to account for the binding force between neutron neutron or proton proton or neutron proton, a pair of existence of the neutral meson or neutrino was similarly postulated in this way. That is, neutron gives to neutron dash plus mu zero, or proton gives proton dash plus mu zero. These are the neutrino particle that is called as the mesons. The value of this one, if we calculated the mass of all this thing with the help of the formula, the mass of this rest mass is 1.76 into 10 raised to minus 28 kg. And all these things where mass जो है तो कितनी रहेंगी इलेक्ट्रॉन की वो सेम all these things. So adopting the Yukawa theory, the question arises why Yukawa mesons are emitted by the radioactive nuclides instead of the beta particles. So it is the one type. You just remember one thing from this particular article, that mesons are the heteroatomic particles which are clouded by the protons and neutrons inside the nucleus. They are formed by the continuous exchange of charge from one particle to the another particle, and that is called as the mesons, isn't it? Now nuclear stability. समझ में आएगा कि टर्म न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं? कि न्यूक्लियस का स्टेबल रहना. कब रहेगा जी न्यूक्लियस स्टेबल? आपका एटॉमिक नंबर, आपका जो है तो कोई एटम स्टेबल कब रहता? सेम क्राइटेरिया वी विल अप्लाई हियर. आपने स्टेबिलिटी ऑफ एटम पढ़े ना? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. Stability of the atom is depend on which factor? Please tell me. Tanaza, please tell me. 5 to 10 minutes are there. Please tell me. अगर नहीं आता तो वो भी बोलिएगा प्लीज. जैसा कि केमिकल में आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एटम की स्टेबिलिटी डिसाइड करता है क्या नहीं? So in the similar Yes, sir. manner, on the basis of proton and neutron present inside the nucleus, भी कोई न्यूक्लियस स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. So on the basis of proton and neutron model of nucleus, it is obvious that for the stable nuclei, stronger nuclear force between the nucleons dominate over the Coulomb repulsive force between the protons. Therefore, the neutron-proton ratio has a significant role to determine the stability of nucleus. भाई न्यूक्लियस स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, ये डिसाइड करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद. भाई ये कौन कितना है, प्रोटॉन की ज्यादा है कि न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है, इनकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि न्यूक्लियस स्टेबल है क्या अनस्टेबल है. And depending upon the number of protons and number of neutrons, it is found that out of the 900 nuclei, 274 stable nuclei are there, when the strong nuclei are classified at even and odd number of protons and neutrons. न्यूक्लियस के अंदर अगर इवन प्रोटॉन्स है या इवन ऑड प्रोटॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन, उस वक्त पेयर ज्यादा बनता, वो ज्यादा स्टेबल रहता. अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद अगर ऑड है तो वो स्टेबिलिटी में कम रहते, और अगर प्रोटॉन ऑड है और न्यूट्रॉन इवन है तो वो भी स्टेबिलिटी में कम और ज्यादा के बीच में रहते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट रहते हैं. ये टेबल यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, तो इसके स्टेबल न्यूक्लियाई की तादाद कितनी है? 162. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इवन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑड, then stable nuclei are only 56. If number of Z, that is proton number, is odd, neutron number is even, then the stable nuclei are 52. और अगर दोनों भी ऑड है तो इट इज 4. यानी कि ओवरऑल यहाँ से टेबल से एक बात आपको समझ में आई कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है, इसका इन्हिसार किसके ऊपर है? उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर. If the number of protons and number of neutrons both are even numbers, then what happen? Even number है तो पेयर बराबर बनेगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगी और न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा. If the number of protons and neutrons are odd in number, then at that time interacting pair is less,
यानी बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे रहेंगे कि उनको इंटरेक्टिंग, क्योंकि न्यूक्लियस को जुड़ के रखने के वास्ते पेयर रहना जरूरी है। भाई घर को मजबूत रखने के वास्ते घर के लोग मजबूत रहना जरूरी है कि नहीं? वैसे न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के वास्ते क्या रहना जरूरी है? उसके मेंबर्स इंटैक्ट रहना जरूरी है, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे। तो इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर इवन, then nucleus is most stable. If the number of protons and neutrons, they are, one is having the odd number, another is having the even number, then stability is intermediate, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल भी नहीं, बल्कि बीच में की रहेंगी स्टेबिलिटी। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बोथ आर ऑड, then these are less stable, that is called as the nuclear stability. So this is the most important concept, that nuclear stability can also be explained on the basis of the binding energy. The radius are defined this way, that nuclear potential radius, it is slightly larger than the charge of the mass of the radius, isn't it? So with this one we will complete this nuclear forces. Have you got this idea? समझ में आई क्या बात आपकी? Yes, sir. अगर नहीं समझ में आई तो मुझे फोन करें, मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो विद दिस वन वी विल स्टॉप हियर। नाउ डे आफ्टर टुमारो वी विल कंडक्ट द पीरियड at our